Okay. You are alone. Last week you were absent. What happened to you? Bring it. Can I come inside? Come. Sir, please. No, both come together. That's the reason we're asking where. Sign. Pick up like this. Sit, relax. Where a bag hota urban areas, right? If it is a small scale manufacturing unit. Petty shops में नहीं होगा, small industrial units में हो सकता है, where labor requirement is less, but people are working, समझा? तो उसको हम लोग under employment दिखता है ना, अब तो small scale units में बोलो, मार्क्स नहीं मिला? मैम ने petty shop लेके दिया है। Quickly. बस यार मैं लास्ट क्लास के दिखाया है। तुम दोनों को पूछने से अच्छा तुम खुद ही कर लो that is better. Both know क्या Minerals and energy resources. in that what did I do? Just check. Sir, आपने distribution importance metallic minerals factors of उसको जरा दे देना. Better right. What is metallic minerals, na? Yes, sir. Which contain items. Ores which are containing irons or polymetallic ores.
Come quickly. I think like good. You could ask na come in or go up. It's looking May at. I go out? उसके लिए बोलना you are already out. मास्टर साइन करना नहीं दूंगा. हाँ? लेट आए ना? कर लो. इतना भी ईमानदार. Yeah, finish in economics globalization for you, ना? हाँ जी. पक्का जब. Yes sir, yes sir. Where I'm going quick है. तो इसी के तरह मेरा पोर्शन खत्म हो गया. मैं एक लाइफलाइंस बाकी और एक मैन्युफैक्चरिंग बाकी. तो ये दो लेक्चर मिलेगा ना. I can finish it in 2 weeks. I'll be free from my little bit of burden. Yes. Put the heading metallic minerals in your notebook. So metallic हो गया ना. हम लोग तो बोलेंगे. Ferrous minerals हो जाएगा ना. हाँ हो चुका है. Are you sure in that? Sir, not ferrous minerals. Non-ferrous. ठीक है. सर गणपति का हॉलीडे नहीं है ना. इधर नहीं है. स्कूल में लगना. ना सैटरडे को है. इधर शायद एक दिन मिलेगा. सैटरडे पे सर को किस क्या. हाँ एक ही है. बाकी ये फिर भी खबर रखते हैं है ना. Write down for mica. First of all, you know what is mica? Have you seen these black kind of rocks, big rocks which are roadside? White color patches उसमें रहता है. And these are generally good dielectric strength. You know what is dielectric strength? It can withstand good amount of heat and electricity. So normally what is going to happen whenever we have any electrical substance which is going to have some huge electric current flowing, to cut off that we have this. So this mica is very important, especially in which industry? Electrical industry. So write down what is mica. एक मिनट mica वो नॉन मेटालिक में है. ये नॉन मेटालिक मैंने नहीं किया है. Just one minute. Hello. Yeah, this is Alsh. Manish Prabhu, right? Yeah. I've got a call. She had sent me a mail. But I didn't run into the in fact, I had seen one scheme. So any idea? See, she asked me to send me my latest CV. So this is what I start working on that, but I don't remember the name of the I believe, I don't know the email address. Oh my God. Now, if shall I forward my CV to you? You can. Okay. If possible, ask her to call. It's not considered as the CV you just forwarded. Because she hasn't sent me an email. That is the reason. Okay. Okay. So I'll send you my CV to your email. No, I haven't received the email. That is the reason.
If not, I would have directly sent the email to her, my CV to her. Okay. Awesome. Okay, thank you. Yeah. मैं दोस्त का नाम से बात करती हूँ क्या reason है? तो बता। वो संस्कृत का वो क्लास टेस्ट के डिपार्टमेंट अभी in between the lecture जरूरी है। तो बाद में भी तो ले सकता है। पर वो 7:30 के बाद होगा हाँ तो 7 o'clock को मैं भेजता हूँ तुझे। Hey, listen. Under non-metallic minerals only we have mica. Non-ferrous, I think these guys have confused me. Copper हम लोग ने नहीं किया, bauxite ने हम लोग ने नहीं किया, किया है। I'm asking किया कि नहीं किया? सर आपने बताया था लेकिन लिखा है नहीं। हाँ तो चलेगा ना, marking and I will explain that. मार्किंग ने अच्छा चलो, फिर हम ऐसे हाँ कॉपर करते हैं, ऊपर से कैसे करेगा? चलो come to page number 113. नॉन फेरस मेटल्स नहीं लिखना। हाँ मत लिखो अभी, क्या करें? अरे वही तो लिखना है सर, ये नॉन फेरस है वो नॉन मेटालिक है। हाँ my dear, under non-ferrous we have one copper. Second is bauxite aluminum. I do it from here only. And जैसा मैंने बोर्ड में लिखा नॉन मेटालिक माइका से मैं नोट्स दूंगा। तो अभी आप क्या बता रहे हो? अभी आई एम taking you into the volume for teaching you copper and bauxite which is non-ferrous. पूजा मिल के आ जा, मतलब भाई सबका आत्मा उधर ही को मिले। पर ना रुक जा। देखो, these metals include open bracket copper, bauxite, lead, zinc and gold. Did you see? Is gold also non-metal? No. It's a metal. सर पर उसमें आइटम नहीं मैंगनीज किया हमने, वो किया कल ही किया कल तो मैं आया ही नहीं। अरे मतलब अच्छा एक काम कर, लेट्स स्टार्ट विद कॉपर। चलो कॉपर। अरे हमने इकट्ठा किया था, तूने बोला था गुड क्वालिटी है। अरे वो तो विराज से पढ़ रहा था। Wait, copper. Viraj, turn your video on. We are starting with copper. So underline that. Location is MP, Rajasthan, Jharkhand. And special features, and underline that. Deficient in copper reserves. Just 1 minute. Put that heading and key. Amount of the hospital. 3 points. कोई क्लास में ही है कोई टीचर क्लास में नहीं है, क्लास में नहीं है। राधिका मामा डिस्ट्रिक्ट चौधरी बाप रे कुछ छोड़कर सब नहीं है, इनका तो कोई और नहीं है, नहीं उनका स्पोर्ट के लिए कोई नहीं है। Hey guys, listen. I have not confused. One is non-metallic, and other is मेटल non-ferrous. हाँ वही दोनों अलग है सर, क्योंकि कॉपर वगैरह भी मेटल होते हैं लेकिन वो आयरन रिलेटेड नहीं होते। हाँ तो that is non-ferrous. या वही Non-ferrous is one, non-metallic is another. Simple है. So we are doing non-ferrous starting with copper. वो भी metals है, but it is not having iron. That is right. Chalo. Let's start with copper. Did you see? India is deficient. Underline that. Used for making open bracket utensils, electric wires and alloys, electronics and देखो, if you see उधर वो नहीं दिया है, वो लिख लो defense industries act, defense industries. Viraj, which page are we doing? Viraj, are you there? Whenever you see any bullet shells are made out of copper, and coppers are highly conductor.
All wires are made out of now copper, lowest resistance and highest conductivity. And एक टाइम पे अल्यूमिनियम ऑयल यूज होता था, अभी अल्यूमिनियम बंद, हर जगह ओनली कॉपर वायर। ठीक है, चलो बॉक्साइट आया, बॉक्साइट के ब्रैकेट में लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, bauxite is the ore of aluminum. Main deposits, open bracket, Amakantak, close bracket, Bilaspur, Katni. ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, that is enough. Then Odisha, underline, largest bauxite producing state. Actually इधर भी है, चलो उधर ब्रैकेट में डाल दो। 34.97 है। अगर आप एग्जाम में 35% पे लिखा, we will take it. Okay. Then actually Panchpat Mali, underline, Koraput, ये राजस्थान का है, I think. Then bauxite, aluminium, vast reserves, decomposition of rocks. Then aluminium, underline, strong and light. And उसमें एक चीज नहीं दिया, let me see whether how you guys react when I write this. Anybody knows what is duralumin? Duralumin. Durable. High cost aluminum used for airplane body. Chalo, ये भी लिखो. Airplane. It is not aeroplane. We Indians use it wrong. Duralumin. लिखो volume में notebook में. It is a very high cost metal. But it is aluminum only. Sorry. So it's लिखा तो है manufacturing of aeroplanes. But क्या है? Only kind of idea. So it is duralumin. अगर किसी ने पूछा. And which is the biggest company which manufactures airplane body? Wait. 747 or 777? 7%. Where it is located? Yes. And Europe. UK. So let's proceed with the rock minerals. Limestone. Limestone is Non-metallic. माइका में है ना, तो हाँ, non-metallic is mica. Come on, made up of series of plates. And if I tell you, in our school days, we used to get mica. Where do we get it mica? Normally, electronic press or electrical press. Nowadays, we have like this, is it? और उसके अंदर exactly ऐसा एक layer का ये fit रहता, and it is very thin, very thin, and fully shiny white color का रहता था ये. And when that iron gets not usable, now we used to remove it and we can break it. इसको माइका बोलते हैं. आजकल ग्रीन कलर का मिलता है, ब्राउन कलर का मिलता है, and white color. White color is normally found, and it has a dielectric strength. It can resist both heat and electricity. तो आयन का जो प्लेट है उसके ऊपर ये बिठाया जाता था. आयन गर्म तो होगा, पर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. Understood what I'm saying? हाँ, अभी नहीं है, अभी तो हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम. ये आयन आ गया, आयन प्रेस that we use in our house. यूनिफॉर्म प्रेस करके पहनते कि नहीं? हाँ, ऐसा. चलो, that is mica. Let's proceed with mica now. अब आयरन को तोड़ के mica. हाँ, हम लोग तो बस. I was a person who used to be a mental electronics. सब कुछ ओपन करके छोड़ दो. And फिर मेरे पापा पूछेंगे, वो ऐसे. ठीक. Mica is made up of लिखा, Jharkhand, Bihar, AP, then Chota Nagpur, Kodarma, very important, underline Kodarma. Sir, AP का मतलब आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश. देखो, whenever we are using it with northeastern, it will be Arunachal. अगर generally AP लिखा रहेगा तो बोलेंगे आंध्रा. अरुणाचल की अगर ARP लिखा तो अरुणाचल प्रदेश. ये कौन सा? अभी तक तो मैंने कहीं ARP लिखा ही नहीं है. हाँ, इसलिए वो हम लोग हमारे शॉर्टकट के लिए पढ़ते हैं. जब अरुणाचल प्रदेश रहता मैं खुद बोलता हूँ. कैसे पढ़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश? You write the full form. Leave it.
तो ये क्या अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? किधर है? तू एपी लिखना एग्जाम में। अरे उधर है ना, नीचे लिखा आंध्र प्रदेश। कंफ्यूज कर गधे। एग्जाम में एपी लिख देते हैं। हाँ, स्पेशल फीचर्स में आ जाओ। Mica is made up of series of plates, splits easily, split into thin sheets. Circle that word dielectric spell. So what is that word low power loss? बहुत कम पावर लॉस होता Next, withstand high voltage. और उसका कलर क्या क्या है देखो, क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड और ब्राउन। अगर आप रेड और ब्राउन देखेंगे ना, ये बड़ा बड़ा वायर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लाइन लगा रहता है, देखा है? उसमें से रेड कलर के से सर्कल जैसा रहेगा, ठीक है, जिसमें से वायर पास होता है। एंड वो आके ब्राउन कलर का है, एंड दैट इज आल्सो माइका। ये फीडर्स क्या है उसको वो भी नहीं मालूम है, ऐसा रहता है ना, जिसमें से अरे अपना ये इसके बीचों बीच रहता है, देखो पानी के बीचों बीच, एंड ऐसा रहेगा। है। ये क्या क्रिसमस ट्री? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो रहता है ना सर्कल का, इतना बड़ा रहेगा व्हेन इट ब्रॉट डाउन, इसके नीचे से वायर जाता है। ये है ब्राउन कलर माइका, ब्राउन रहेगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिशियन कम्स इन, वो एक के ऊपर एक डालते हैं, तो उसमें एक स्पेसिंग लगाते हैं, फिर उसको लेते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी वायर का करंट इसमें गया ना, ये माइका उसको स्टॉप कर देगा, वो पोल्स में करंट नहीं है। That is the reason they put that word mica, substance called mica. Okay, go ahead. It has excellent last one, dielectric strength. बस अब ये जो मैंने मार्क किया ना, only for mica you write it in your notebook. Bauxite का मैं नहीं डिपार्टमेंट। Put the heading non-metallic minerals. Viraj, are you studying, writing? What are you doing? I'm going to mark you present and don't forget it. Non-metallic metals. क्या? Minerals. ठीक है, minerals। देख, Only for mica you write it. ओ ये सब लिखना है। नहीं चॉट ले। What kind of language is this? Sir, it's Deutsch language. हम भी वो डॉश लैंग्वेज समझते हैं। कोई किसी को नहीं समझता, बस इसको ही समझता है। Deutsch language.
Later. Wait, my brother. बस क्या तबलीग में चल तू मत कर किया तो तूने I'm looking into some important CV that I have to forward. Sure. डेफिनेटली मुझे सही आई तो आता नहीं इसका रखना चाहिए मैथ्स का आई सेंस इट्स क्लियर आउट ना आया इन आपसे ये तो मेरा पॉइंट है अरे सबसे यार वो तुमने टेस्ट किया ना क्या चल रहा है किधर का एग्जाम स्कूल का है किधर का इधर का अच्छा कब होता है संडे but that is today is Wednesday till that you guys did not meet each other दिन मिला आज ही ना then what मंडे को ही आ गए चलो let's go for the special features मैंने दिया है मार्क कर दिया let's go to rock minerals now I'm giving it directly right rock minerals one limestone हाय talking to the teacher like this sorry rock minerals you write limestone first main component in the production of cement, a main component, production of cement. Second point, so me yes found along with calcium carbonate and magnesium carbonate, found along with calcium carbonate and magnesium carbonate. Next, its origin is from sedimentary rocks of geological formation. Geological मतलब बहुत old. Sedimentary rocks of geological formation. Geological. Next. geological Rocks or formations. Next.
It is also used in smelting of iron. Smelting and not melting. It is also used in smelting of iron. Next. Also found in chemical industries. Why? केमिकल इंडस्ट्री में ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है. You know what is catalyst ना? Next, increasing use of limestone with increase in construction activity. With increase in construction all round activity. Increasing. Increase in all round construction activity. Construction activity. Put I think. तो कौन सा कंपनी में ज्यादा यूज होगा? ऑलरेडी सीमेंट फैक्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज ना फैक्ट्रीज. हाँ, in cement industries. Check all this. Next. आपने उसको एग्जिट कर दिया. इतना हो गया नहीं पाएगा. If not reacting nothing, then why is he sitting inside the classroom? Yes. To show the attendance or what? Chalo. Shall we go to the next? Why not? This chapter will be coming to an end today only because it goes like a dragon tail now. But we'll try to finish, cut the dragon tail short. है ना? Rock metal तो होने के बाद मालूम है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है. हाँ, write down the question I will give you. List out main hazards. Okay, what are hazards? Dangers. Huh? List out the main hazards. List out the main hazards. Mining. Main hazards of mining industries. Just understand, then we can write. Because you and me have at least not seen what is mining. Yes. Miners every day go inside the mines. It is their activity. But they are always in the peril. What is peril? This girl, you come out the beer this side. I told you not to attach yourself to that pillar. कौन है उधर वो पिलर में आपका? मिडिल में? नहीं वो she will देखो. That is that girl and you are that. We believe only one thing. The miners or the mining is called as a killer industry. Because not necessarily every mine is having a problem, but at the same time, not necessarily every mine is safe also. Sometimes the water gushes in. By the time the laborers try to come out, the entire mines are filled with water. It is called as RTCN well. I'll give the spelling. Roof of the mines collapse. Poisonous gases. Fire accidents. What not? If I am going to a job today, I know that something is going to happen. Tomorrow again with that fear I am going. What is the guarantee of the life? But then, if they do not risk their life, the mines cannot be dug out. किसी ने बोला सर machines आ गया, but machines कितना अंदर जाएगा? Miners has to go. Because safety precautions they do follow.
But when they are 50 feet, 60 feet under the ground, you might have seen many times miners are trapped inside, correct? And our, what is that, NDRF team or the very special team comes in to save the lives of these miners. Many a times miners will maybe like great trouble they get out, and majority of the time they die also. So I literally feel this mining is a nationalized company. You know what is nationalized? Everything is in the hands of the government. But still there are private miners. You remember rat hole mining? I showed you some videos of the rat hole. And then I showed you that 13 lives, which was a real story we are based on. So there are so many other factors which are involved in. So that is what we are going to write as what? Hazards of which industry? Mining industry. Correct? I understood. So can you show I'll show you. I didn't make it. What were the rules of the last class? she wrote all the notes of हाँ, the very good. आपको कल परसों लेने का था ना, आज ही आके क्यों इतना मैनेज से जल्दी कर रहे it's not जल्दी लिखती थी हैं? लोग सब बोल रहे हैं देखो when you miss my class that is on Wednesday. You meet them on Sunday. You tell them you guys come on Monday and Tuesday. mine is not Sorry, sir. Yeah, it's a bit that's a problem. चलो right up. Mining industry is best referred as killer industry. Put it into double inverted comma. Mining industry is also referred as killer industry, mainly because of several hazards the miners are exposed to, mainly because of several hazards the miners are exposed to. Some of the important, the next one, some of the important hazards are one, ever increasing harmful air pollution scenario. harmful Huh? harmful Pollutants in the air. Second, dust and noxious, actually obnoxious, noxious fumes. The spelling of NOXIOUS gives rise to noxious fumes. Gives rise to respiratory problems to miners. अगर pulmonary डाला है तो उसको मैंने respiratory problems to miners. Yeah, understand and write. You have anything query, please. तो वो सब स्मोक मास्क नहीं पहनते जब पहनते हैं. तो ठीक अभी इंडिया में कैसा है ना, when I say safety, for few days they feel तो बोलते हैं एक अंदर ऐसे जा.
आप ज्यादा से ज्यादा ये अपना आटा चक्की वाला को देखा है आपके एरिया में जो आटा पीसता है हाँ। तो कैसे दिखता है? It's good task in order to give you a number. It's more like white panda. क्यों वो white panda की तरह दिखता है? क्योंकि आटा आटा से प्लस वो कभी वो सब पहन के रहता है ना हाथ में ग्लव्स पहन है ना बस सर पे तो कुछ बांध दो क्योंकि तेरा बाल से जो भी जूम वाला होगा अपने ही आटा पे लगता and he himself will eat unwantedly more than 2 to 3 kilos of आटा उसका मुंह पे नहीं जाता देखा कैसे दिखता है ये तो फिर भी ठीक है हमारे शायद महाराष्ट्र में भी करते रहेंगे सॉरी ये जो मसाला पीसने वाले भैया लोग को देखा है दे आर आल्सो लाइक दैट हमको मसाला थोड़ा भी मुंह में जाएगा ना we will be sneezing 10 times ये तो बिंदास उसको बोलते नहीं सर मैं मतलब 10 साल से इसको जानता हूं many people die out of this breathing related अभी रेड चिली उसका पाउडर बनाता है मशीन and he is dead you understand what I'm saying you will be inhaling but पूरा तेरा जो lungs या जो ट्रकिया उसमें जाके बैठ रहा है ना one finding will die only so it is only the Europeans and the Britishers catching a food you should sanitize your hands पहले बच्चों को स्कूल में sanitize your hand wash it with your wipe it with the tissue paper उसके बाद भी टॉन्ग्स लेके पिज्जा लेके मैं अपना प्लेट में रखता इधर हम पिज्जा आते ही पहले ऐसा अगर मैंने उधर किया तो फिर खत्म nobody will come near to me to eat anything और स्नीज करते समय तूने अगर ओपनली कर दिया they will look at you as if you are a political criminal इधर हम लोग so that's it you have to remember how old you were I don't know when this corona was there how well we were doing the sanitizing हमारे घर में दूध का पैकेट को भी नहीं छोड़ते थे डिप कर कोरोना के डिप कर है ना मसाले के पैकेट्स के लिए हाँ तो अभी किधर गया मसाले को भी नहीं छोड़ते मतलब कोरोना का डर इतना हो गया one politician while he was talking instead of drinking the water he drank a bottle which was kept as sanitizer he did not say क्या किसी बात करता मरेगा नहीं थोड़ा इश्यूज होगा हॉस्पिटल इतने बढ़ता he just opened the tank without seeing कि sanitizer है क्या पानी है तुरंत उसका टेस्ट नहीं समझा वो भैया वो छोटा सा तो बॉटल रहता है पानी का पैसा लोग ने रख दिया अभी पॉलिटिशियन है पैसा अंडरस्टैंड बहुत काम होता हाँ ये तो फिर भी ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प दैट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसने बोला आई विल आस्क माय अमेरिकन्स टू ड्रिंक जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन ने भी दिया था गलती में छोटा सा अंदर जाने के बाद आपको कोरोना नहीं हुआ बहुत काइंड ऑफ प्रेसिडेंट्स के तो उसके लिए हमेशा उसको मैं अमेरिकन राहुल गांधी बोलता अभी आई थिंक रिटर्न इलेक्शन हो रहा है तो 90% डोनाल्ड ट्रम्प भी उधर का प्रेसिडेंट इलेक्शन और मैं बोलता हूँ कि वो आना भी चाहिए देन ओनली इट इज गुड फॉर कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज़ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय चाइना वेल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रम्प आ गया ना इज एंटी चाइनीज एंड इज अ प्रो रशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है and he has a very good coordination with our prime minister. बहुत चीजें जो अमेरिका भी हमको दे रहा है ऐसे कि नहीं पर थोड़ा सा बट अगर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाएगा you remember when he opened the big stadium in Mochera stadium अरे गुजरात में जो क्रिकेट स्टेडियम ओपन करने भैया है you don't know you haven't seen दोनों ने एक दूसरे का नाम पे गलती करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प को भी उसने कुछ तो गंदा बोल दिया था हाँ क्रिकेटर्स का नाम अरे उसने अगर गलती किया डोनाल्ड ट्रम्प ने वो स्पीच बोलते बोलते इन नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला तो इसमें भी वो ऐसा कुछ तो ये भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रम्प purposely kept them with them but then the understanding of America and India is best other reason तो इंडिया को जो अचीव करने का ना डोनाल्ड ट्रम्प आने से काम आसान होता है and he is a person like Rahul Gandhi भाषण देता but चलिए चिंता मत इलेक्शन अभी आगे नहीं अभी आगे क्या मिलेगा the elections are bound to happen in America and because of us getting a bullet on his ear है ना and other things and Jonathan Biden तो वैसे भी आधा सोता ही रहता है उसने तो वो कर दिया था बैकआउट कर लिया उसको बैकआउट नहीं है he has been caught by person
नहीं क्या बोलते हैं जो बटन ने तो बैकअप कर दिया बैकअप नहीं, इक्वल टू फाइल का नॉमिनेशन वो थोड़ी रूल कर रहा है, उसके पीछे तो बैरक ओबामा ही, बैरक ओबामा इज द रियल प्रेसिडेंट, ये तो साला सर नहीं के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं। बैरक ओबामा इज वेरी स्ट्रांग and he's anti-Indian fellow and pro-Pakistani fellow because वो मुस्लिम है, he's not a Christian. हाँ, उसीलिए तो उसको रखा था जब ओसामा बिन लादेन को मारने का था. He's the only president who does namaz in the White House every Friday. So these are all high-level politics. Purposely लोग ने बैरक ओबामा को president बनाया, फिर ओसामा बिन लादेन को मारा, और उसका टाइम पे यही president था. So there are a lot of politics in. अभी ओपन है कमला हैरिस, she's the vice president ना. कमला हैरिस तो क्या पोस्ट है, कुछ भी नहीं, she's just a vice president. एंड उसका मम्मी और पापा का जन्म इधर हुआ था, शी इज फ्रॉम चेन्नई. अरे बाबा कमला हैरिस, तो फिर क्या है, उसका नाम कमला कैसे है? कमला हाँ, शी इज एन इंडियन. कमल कमल नहीं, बीजेपी के साथ मत जो, बहुत मार खाएगा. लेट्स गो इनटू, कमला सिन्हा किधर था अभी हम लोग? कमला hazard of finding method. कौन सा पॉइंट लिखा? Second, not share students give the right school necessarily problems. हाँ, next point, right down. Hazards of mining. I had removed him, he doesn't know that also. वो Soral. अभी भी नहीं आया Yeah. फिर आपको ब्रेक करोगे हाँ? कर दो क्यों? वो आने दो, अंदर तो आने दे. उसको वेटिंग रूम में नहीं रहा है, रिमूव हिम आउट ऑफ द क्लास. नहीं, वो तो बोला ही है, जब भी उसकी मम्मी या पापा मिलेंगे तो आई एम गोइंग टू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ्स. रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ रूफ माइंस, रूफ ऑफ द माइंस, क्या बोलना. नेक्स्ट, इनंडेशन ऑफ, inundation next point, inundation of inundation mines, also known as inundation मतलब पानी भर जाना, also known as, this is the problem of artesian well. Next, next, तो भाई इतना टेंशन में क्यों है आज, क्या हो गया? और पहले पानी पियो, हैव द वाटर. आई एम स्टॉपिंग इट, आई एम नॉट गिविंग नोट्स. ये दिव्या देखो कूल है, तो उसको हेल्प नहीं करता है. मुझे लगता है एग्जाम के अंदर आएंगे हाँ एग्जाम की वजह से बहुत पढ़ लिया ना रात में. तुम चौक तो से एग्जाम शॉप होता है शुरुआत मोटू दिव्या ने आंसर मुझे कैसे दिया है? अच्छा बच्चा. बस रख दो उसी के पास रखो. When she has cup and this one, I have some. Let us go to the next point. Collapsing roofs, inundation लिख दिया. यस सर Next, dumping of waste and slurry. ये दूसरा. है कैसे हाँ तो लिख तो सही में बताऊंगा. Dumping of waste and slurry. एड Slurry. पोटी Mining में कहाँ से गया है? SLURRY. जी वो Dumping of पर उसको ही बोलते हैं अरे सुलिक waste and slurry. अरे तो लिख Degradation, leading to degradation of land and soil. Look here, whenever we have mines, correct? अभी ये mine का door है सर, और सॉइल ये mine ऐसा है अंदर से. So whenever they are mining all this, they have to bring all unwanted slurries out. ये बीच के अंदर से वो लेकर आता है, and they just dump it in the open yard. तो इधर का जो land रहेगा, all जो अंदर का जो slurry and waste है वो पूरा बाहर dumping होता है. Why they don't leave it inside only?
If they leave it inside, how they will dig? Understood? So on one side they will be taking the minerals, on other side they will bring it and keep on dumping. And वो पूरा land degrade हो सकता है. So one of the students from I think Khargar branch, sir, you are saying so much trouble is there. Why can't we stop mining? Very good बेटा. फिर industry चलेगा कैसे? Coal बाहर आएगा. Sir इतना सारा problem है. We have to very carefully safety regulations, strict rules. Government should penalize if people are not following the rules and regulations. And if it is any health hazards are there, the laborer has to be given the क्या बोलते हैं protection. Which protection? Insurance देना चाहिए. And try to save the laborers as quickly as possible. ऐसा नहीं कि सबसे तेज channel आता है cover करने के लिए 3 दिन के बाद. और इंसिडेंट हुआ 3 दिन के पहले और पूरा वेल की तरह भरा हुआ. फिर बोलते कल तक से 40 लोग काम कर रहे थे, आज तक अरे पानी के अंदर आज तक क्या हो, थोड़ी स्कूबा डाइविंग करने गए एंड ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि इनका हालत क्या है. कुछ हालत नहीं, सब गया. बट चैनल को क्या अपना टीआरपी रेटिंग चालू रखना ऐसा. देखो वाटर नोट क्या है. Wait, she's a lady that only. Wait, she's checking, wait. पीछे बैठ जाओ. Jaldi karo my dear. Next point you write down. Strict safety rules needs to be implemented. Strict safety rules needs to be implemented to protect the miners and also the environment. To protect the miners and also the environment. And also the environment. Regularization of mining activity. Regularization of mining activity. सर पर ये hazards of mining industry में कहाँ से? तो फिर क्या स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं डाला तो फिर तो डेंजर ही हो जाएगा ना. सर regulation of Regularization of mining industry, especially for the private sector. regularization of Mining industry, especially with that of private sector. What I feel? Strict licensing. Strict licensing. Hyphen. Penalties and fines. Strict licensing. Penalties and fines. In case of any violation of the rules. You understand the meaning of the violation? VIO sorry, VIO LAT. Violation मतलब किसने पास नहीं किया? Change the verb. Despite DE. सर case में which point? Conclusion. Despite several hazards, mining provides high employment opportunities. High employment opportunities to the poor citizens of the country. चलो रीड कर लो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हेडिंग ही लिखना. Conservation and importance of minerals.
Conservation of minerals, so then and its importance. So we have got, I think, on hardly 2-3 minutes. Yeah. So we're going to. So please run down the question answers. ये बढ़िया संस्कृत के बात करा अरे ना वॉशरूम तू जाकर आ गया नहीं अरे तू बोला ना जाके मैडम से मिलना नहीं मिला जल्दी जल्दी you go to page number 130 okay 130 140 and 139 there are some 10 questions now you can solve 1 2 3 4 chalo तो लास्ट टाइम भी दिए थे तो 5 6 7 8 करो फिर जो आएंगे वो 1 2 3 4 करेंगे तो हमने कॉल किया किया है बोल तो नहीं हाँ ऐसे कैसे बोल नहीं करेंगे चलो देख सर नेक्स्ट टॉपिक है कॉल हम तो करेंगे The question और conservation of minerals भी है दे रहा हूँ अब then I will require for your exams with these guys the exam क्या any changes in the portion or your school level exams coming in when it is coming in 20th when when no then ours are SSC papers in May how much you got you are expecting so how many chapters you had it all completed here
8 or 9? 8. What was the last geography chapter? What was the last geography chapter here? That is economics. Agriculture. Agriculture had finished, is it? So we are having only two major